basic unique solution also. You guys should have add the unique slide of the PPT, like what uniqueness you guys have, because everyone will make PPT. Suppose that I am asking to make a basic simple job portal, so everyone will put like we will post a job, we will post the queries, interviews will be conducted on our portal. So what unique ideas you have behind? On the basis of that, your PPTs will be selected, because you guys will not be there to present your PPT. So your PPTs will be self-explainable. After that, you have to describe your technology stack, like for what technology you are going to work. You can use any technology stack, it depends upon you. And the clear hint is that you can change your technology even after getting selected in SIH. Suppose that you are saying that you will make your particular portal in Java, and after that, like suppose that you are hello. Yes, sir, you are audible. Yeah, sorry guys, there was just network attenuation at my side. So shall I continue? Yes, sir. Yeah. So here, like you have to in the idea approach details, you guys have to put the your use case. Use case is most important. Like with the using of flow chart, you can explain how your login process, how your sign up process, how you will land to the home page, also how you will navigate between the pages. You can explain here. So this slide is most important. And after that, next slide regarding the team members details. Wait. Just I just missed one slide. Manish, can you please go to the next slide? Hello guys, am I audible? This is Shivam this side. Yes, sir, you are. Okay, so I think again it's a not network problem for Anand. Let me continue from here. When he will join, he'll continue.
So this slide is for idea and approach details. So as in previous slide, it has explained that you need to be unique. Now uniqueness is there. You explain all your uniqueness that is you are going to build in your website, either whatever the idea approaches you have. What is the uniqueness? Now this slide it says that idea and approach details. This thing matter a lot in your SIH hackathon. Whenever there is one judge comes, they always look for it, like how the idea is being implemented and what are the approaches that a student is following to build up that idea. Now here you'll have to little professional, like at a student level we are learning these kind of things, how to be professional and the things. But you have an idea. If it is a simple idea, it doesn't matter, like unique idea, simple idea, or very complicated idea you have, doesn't matter. If it is a simple idea also, now if your approach is a bit good, then you'll be great in that position. Because just simple understand this thing. You took a solution which has selected in SIH. Now you have put the idea over it. Now, idea is very simple that I'm gonna build a website for a job portal. I'm just taking an example. Now, how you are going to do that? What is your approaches? Which team member is going to do what? Which team member is taking what care of things, like who is building, who is explaining the things, what is inside the website, and these all aspects mainly will matter a lot in SIH competitions. I think Anand is back, so I would like him to continue. Anand, you are there. Yeah, thank you, Shivam. Yeah, so here you have to describe your use case, like how your website will work. I repeat, like because you guys will not be present there to explain your PPT, so your PPT should be self-explainable. So like just make PPT clear and very precise, and uniqueness should be there, because without uniqueness, why it will select your PPT? And after that, here the dependencies and showstopper. Like showstopper is like what things are necessary to run your prototype or run your software. Like internet is commonly a showstopper. Like without internet you cannot run many portals and all. So after that we'll come to the next slide, team members details. Team members is like you can select any student from your particular college. You cannot select from the outside the college, but you can select the team from the, like you can make two members from MBA, two members from BCA, two members from BTech. This you can make, and there should be one girl member should be compulsory. Like you can make the entire team of the girls, like six girls can be there in team, but at least one should be present. And no outside college, you cannot make a team from the outside colleges. So inside a college you can make you can choose any member. So, and I would like to advise, like just don't run behind the technocrats. Yeah, technocrats should be there in the team, but presenters should also be there. The one who raises the good questions, like when it should be also compulsory in the team. Like the upcoming questions, like what judges can ask from your website or from software, it should be also necessary. So you can just make a team. And about the mentors, you can choose anyone from your college or outside the college, and make mentors. But mentors will not be present, should not present there to when you will describe your PPT in front of the judges. And next slide, important pointers. Important pointers, like your maximum slide is limit to 4 pages, but teams make 5 to 6 pages, but I will recommend to make four pages, because the judges will not give so much time. And after that, all topics should be utilized for the description of your idea, and try to avoid paragraphs and post your ideas in points. Like you can use the better approach will be like post your ideas in bullet forms. So in the one line you can say everything instead of reading paragraph. Everyone avoids to read paragraph. And idea should be unique and novel. Like I just said, you should have a unique name slide, like what uniqueness you will have. And one more thing, whatever you cannot make in your prototype, you can just put it in your future scope. Like in the starting, when WhatsApp was launched, there was no story or status feature, but WhatsApp put these features into its future scope, and now we can use and we can share or see the status.
So it will that's all from my side. And apart from these, like, you should be very concise and very particular about the team, like to whom members you are selecting. Just don't run behind the technocrats. Technocrats are compulsory in the team. Without technocrats you cannot make your prototype. But try to make take a person from all various six domains, because six members are asking. Government can also ask two or three members team, but why it is asking six? Because six have six different minds. That's why. That's all. And I would like to happy if you have any queries and all, you can ask your queries. सर बेसिकली जो हमने ना एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट करवाया था, तो उसमें हमने क्वेरीज का ऑप्शन रखा था, तो कुछ पार्टिसिपेंट ने उस पर अपनी क्वेरीज डाली है, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी इतने आप चैट बॉक्स में जो क्वेरी सारी वो देख लीजिए। ओके, आई गॉट क्वेरी, लाइक हमें पीपीटी कब प्रेजेंट करनी है। रितिका, बेसिकली पीपीटी तुम्हें सबमिट करनी है, वहां पे ग्रैंड फिनाले में तुम्हें पीपीटी नहीं प्रेजेंट करनी है, तुम्हें एक प्रोटोटाइप बनाना है। तुम अपने कॉलेज में बैठ के पूरा प्रोटोटाइप पूरा बना कर ले जा सकते हो वहां पे, तो मतलब 50% बना सकते हो, ऐसा ऐसा एच कहता है। बट एज अ स्मार्ट मूव, इसका नाम हैकेथन क्यों है? नॉर्मल कंपटीशन भी तो रख सकते हैं, क्योंकि तुम्हें हैक करना है यहाँ पे, तुम्हें स्मार्ट मूव खेलना है। तुम पूरा वहां पे सॉफ्टवेयर, पूरी वेबसाइट बना कर ले जाओ वहां पे, और उनके सामने ऐसा प्रेजेंट करो कि तुमने यहीं पे बैठ के बनाया। पीपीटी तुम्हें कॉलेज में प्रेजेंट करनी है इंटरनल हैकेथन में। जो पीपीटी सेलेक्ट होगी वो जाएगा। Yeah, you can add, as Triti asked, can we alter the headings according to our need? Yes, you can definitely alter, but the main thing is that it should be clearly readable and understandable. Like when the judge will see your heading, it should be clearly explainable, like what you want to say in this particular slide. While presenting the PPT, this is the good question from Ayush. While presenting the PPT, only one member can speak or two members are allowed. Even Ayush, entire six members are allowed to speak about your software. The government or the judges are not going to see if one member is going to play, or like you are in the team. So from suppose that in the cricket team there are 11 members, and whoever makes the run, it just get counted. It is not necessarily like baller is scoring century and it will be not counted. So I will recommend like everyone should be there to present your PPT. हैकेथन में कॉलेज का प्रोसीजर क्या होता है अंश? हैकेथन, इंटरनल हैकेथन में कॉलेज का प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है कि जिसकी पीपीटी और जिसका आइडिया अप्रोच सबसे अच्छा होगा, लाइक जिसके अंदर बिजनेस स्कोप होगा और कॉलेज को लगेगा कि ये पार्टिकुलर स्लाइड डेफिनेटली सेलेक्ट होने वाली है एसएच में, तो वो सेलेक्ट होगी। हाँ, मनीष ने रिप्लाई दिया एक आंसर का कि 7 to मैक्स मिलता है टाइम पीपीटी आइडिया प्रेजेंट करने के लिए। यस, प्रोटोटाइप इज डेफिनेटली नीडेड फॉर द लार्जर स्टेट, एंड बेटर यही होगा कि अगर जैसे ही आपका पीपीटी सेलेक्ट होता है आप तुरंत प्रोटोटाइप पे काम करना स्टार्ट कर दो, और बेटर ये होगा पूरा प्रोटोटाइप बनाकर ले जा सकते हो आप। या ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप बोरिंग बनाओगे, बहुत लॉन्ग बनाओगे, तो जजेस आपको एड की तरह स्किप कर देंगे। तो बेटर ये होगा कि आप थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ, और सोल्यूशन आप जो प्रेजेंट करोगे, लाइक दो पार्ट होते हैं, एक आपका प्रोटोटाइप बनाना और उसके प्रेजेंट करना। तो आप जितना बेटर प्रेजेंट करोगे उतना हेल्पफुल होगा आपके लिए। हाँ, दिस इज गुड क्वेश्चन, लाइक इफ लेटर wait, there are too much questions. Sir, as you said that we can put some features in future scope section, but if later during the project preparation duration, if we get idea regarding those features, so yeah, definitely add, and you should add. And one more thing, whatever things you will mention in your PPT, in the final stage when you show the prototype, government or judges will not ask like, hey Akansha, you have mentioned this thing in your PPT and you are presenting me this.
You can present your better and best approach. So you can just, no one going to ask when once your PPT gets selected, no one is going to ask what you have done in your PPT and what you are making the prototype. Just make, there's just two simple steps. Just make a brilliant PPT, and after that PPT once gets selected, just make a brilliant prototype. That which business viability be taken? Yeah, business viability is definitely taken. That's why the hackathon is happening. It should be a business scope, you can the prototype has the courage or has the liability to go into the business consideration. Can be, yeah, you can add your flowchart use cases in your PPTs, definitely. Total slides should be 4 or 4 to 5 slides of the problem statement. The government recommended the maximum 4 slide, but you can go to the 5 slide maximum or 6 slide, because to how you better you are going to explain. For internal dominant to prototype, it's up to the college. If college is asking prototype, you should make a prototype, and if college is asking only PPT, then you can just show the PPT you are going to submit in the SIH. Do we have to show prototype on 14th? It's up to the college. College will inform you if the college want to see the prototype or only PPT. Hers says, what are the benefits of taking parts in SIH? I would like to say, like, the सबको यहाँ पे बेनिफिट चाहिए होता है, और ऐसा ऐसे कोई खाली हाथ नहीं जाता है. अगर आप कुछ किसी पे काम करते हो और आप ग्रैंड फिनाले में हार जाते हो, पीपीटी आपका नहीं सेलेक्ट होता है, और आपके पास वो अप्रोच है, आपके पास वो डिटर्मिनेशन है कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को स्टार्टअप लेवल तक लेके जा सकते हो, तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका है. क्योंकि सिर्फ प्रोटोटाइप जीतने से एसआईएच में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे किसी का ट्रेडमार्क नहीं हो जाता है जब तक वो आईपी इंडिया पे जाके रजिस्टर नहीं करता. तो बेटर यही है कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो आप कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठा के उसको स्टार्टअप लेवल तक ले जा सकते हो. दूसरा बेनिफिट ये है कि इंटरव्यूज में हेल्प होता है काफी. इंटरव्यूज दो ही चीज मांगते हैं, या तो आपने कहीं से इंटर्नशिप करी हो, और या फिर आपने कहीं से प्रोजेक्ट्स बनाए हो. प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप क्यों मांगते हैं? क्योंकि आपने रियल टाइम चीजों पे वर्क किया हो, तो आपको एक्सपीरियंस होगा थोड़ा. अगर हम वहाँ पूरा प्रोटोटाइप बना के ले जाएंगे, देन हमें 36 क्या करना होगा. जजेस आर नॉट फूल्स, दे विल अंडरस्टैंड. अगर आप पूरा बना के ले जाओगे और सारा एक ही साथ दिखा दोगे, तो आपको बाय बोल दिया जाएगा वहीं पे. आपको जो पूरा सॉफ्टवेयर है आपका, आप उसको 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना पड़ेगा कि आप कैसे उसको प्रेजेंट करोगे. लाइक पहले में 30 पार्ट प्रेजेंट करो, दूसरे में नेक्स्ट 30, एंड लास्ट में पूरा एंटायर प्रोजेक्ट अपना प्रिपेयर करो. और लाइक आपको वहाँ करना होगा, क्योंकि अगर जजेस आएंगे तो जजेस के बाद एक मेंटरिंग सेशन होता है. जजेस आपको जो रिकमेंड करते हैं, सपोज दैट आपने व्हाट्सएप बना रहे हो, तो मैं उसमें बोलूंगा अच्छा ठीक है, तो व्हाट्सएप बना रहे हो, अब इसमें एक काम करो कि एक फीचर ये ऐड करो कि मैं किसी की भी लोकेशन उसके मैसेज पे टैप करके देख सकता हूँ कि कहाँ से वो मैसेज भेजा गया है मुझे. तो आपको उस फीचर पे काम करना पड़ेगा. Next question: how to design use case diagram? Use case diagram should be very much simple. Like how much simplest you can make. Like जजेस हो सकता है अपने लैपटॉप में देखिए, इवन हो सकता है कि वो मोबाइल में ही लॉग इन करके आपका पीपीटी देखना शुरू कर दे. तो बेसिक सिंपल अप्रोच यही रहना चाहिए कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड प्रोटोटाइप होना चाहिए कि आपका लॉगिन कैसे वर्क करेगा, आप में एडमिन्स कितने हैं, कि सुपर एडमिन कौन है, कैसे आप लॉग आउट करा रहे हो चीज़ों को, यूनिक फीचर्स में कैसे नेविगेट करा रहे हो उसमें सॉफ्टवेयर में. Business problem proposal in problem statements which are directly used to serve in public. Yeah, you can add. That's why I said like future scope. You are, if you're ready to go for with the business oriented mind in the site wants that. सो आप बिजनेस अप्रोच दिखा सकते हो उनको बेटर, और उसके साथ लेकिन उसमें पीपीटी में भी आपके दम होना चाहिए कि आपको उस पीपीटी में जो आपका आइडिया है वो बिजनेस लेवल तक ले जाने लायक है या नहीं. Information regarding 14th and 12th and 14th will be shared once again in the participants. Yeah. Any more questions? I think there is two question left, and I'll check that. There is one question from Himanshu. I think as most government websites like COVID portal and COVID vaccination does not have any business visibility viability involved.
So, if you saying that Cowin portal does not have any viability business, it was not made for business. Also, it was made for government, Indian government. So, the people who built this kind of website will be awarded by government of India. So here there is no business, but it will be support for Indian government. It will be support for Indian person, and for that, government will award you. Government will give you any kind of kind what is say kind of price they can give you, or they also provide the quotation like we need a portal like COVID because it's a pandemic and we need to inform people on online basis. So we'll need a portal like this or application like this. So as you are a person and you are doing a startup, you can give your quotation to government that this is a portal that we can build in this kind of budget, so government will provide you that also. So this is also kind of business viability. You can understand that. Okay, so next question is how to approach problem statement by implementing what is given or by our own ideas. Uh, you can combine these both things. There is written this should be the requirement. Requirement is written. Now it depends how you are building those requirements, how you are fulfilling those requirements to the people, and that is driven on your idea. Your approaches will help to implement the solution on that problem statement. So you can combine those things like your own ideas with the requirements, and this will be a great composition. Any other questions, guys? Yeah, good morning, sir. Yes, Yeah, tell I me. wanted to ask one question. Like, there was a slide which had display use cases. Could you like Mhm. give a little more clarity about it? Like, I'm not able to understand what exactly we have to put in there. Okay, give me a minute. I'll explain you the use case. I was finding the PPT. I would have explained you, but right now I'm not getting it. Okay, so I'll explain you the use case. So simply understand the way. I'm asking you, explain me how you're going to let people work on your website. Okay, so now you'll have to present me at that time. That's these people go here, he will do this particular thing. After that, like some example of job portal, how people will apply for job or who want to give job, like employer, how he will register. So I will just give a use case like this, that I have website where there is two things. One is registration for user, one is registration for employer. Employer will register on their site, and employee who wants job will register on themselves. Now this both will combine at one particular time where the employee can see the employer's job. Like Naukri right now works. When you log into the Naukri, it comes with a lot of recruiters that this recruiters is hiring this company, this recruiters is hiring this company. So Yeah, right. Yeah. these things are explainable. You just need to make a use case that this user is going to log in like this. After logging like this, he will do this activity to get this particular things. Like a user want to apply for a job, what he will do? An employee will register on the portal, first case, then he will submit all his details, that what kind of job is needed, how much experience he has, how much his expectation, when he can join. These all details are filled. The third part would be like, are the kind of job is available on the portal? Now Yeah. you'll have to explain, yes, recruiters are registered, or now how the job is available on that portal. Now you'll have to write
there is a job portal where employer register. Once employer register, they post the job. This is the job load. This is the salary that we can give. This is the expectation from employee. And if this all are fulfilled, user can apply for this job. So this thing, if you can explain by via diagram, that is called your use case. That these things are going to be done on my portal or my software on my hardware, whatever the things is. And if you can explain via diagram these things, you are able to like this is the use case that you can explain yeah, in that SIH. Okay, so like but all the functionalities that we are incorporating in our project, we have to explain the complete flow using diagrams. This is what use cases Using, are. yes. Okay, okay. Thank you Hi, so much. Ashok. Sorry to interrupt. I have sent our PPT, like what we have made, to the Manish. Manish, would you like to share your screen, please? Yeah, so I think we got our PPT. We'll show you how we built the use case for it. Yeah, yeah, sure, sir. Thank you. Manish, please share the screen. तब तक कुछ क्वेरीज आई हैं या बेसिकली ये वो पीपीटी नहीं है जो हमने जैसे आपको 4 स्लाइड में बनाने को बोले और हम इतना सारा कुछ बना के ले जाएं। हमने कैसा बनाया था वो वहाँ पे खुद के एनालिसिस के लिए बनाया था और कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं कि हमारा वहाँ पे पोर्टल कैसा दिख रहा था, जो हमने गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए इवैल्यूएशन सिस्टम बनाया था। तो बेसिकली मनीष थोड़ी-सी एक स्लाइड अप जाओगे? पहली वाली स्लाइड। या आप हर्ष कहीं से भी कुछ भी चैट जीपीटी यूज़ करो, यूट्यूब यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, बस आपका बढ़िया होना चाहिए। बेसिकली आप लोग बीटेक थर्ड ईयर के हो तो एक सिंपल सी चीज़ है एसडीएलसी मॉडल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। उसमें पहला आता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी होगी, उसके रिक्वायरमेंट समझना होगा कि आपको चाहिए क्या। उसके बाद आप प्रोटोटाइप और डिज़ाइन बिल्डिंग पे आओगे। मनीष, कैन यू शो मी द आवर यूज़ केस? या सिंपल हियर यू कैन मेक योर यूज केस बहुत ही सिंपल होना चाहिए कि आप में लॉगिन कौन कौन करेगा, सुपर एडमिन कौन होगा और कितने इंस्टीट्यूशंस कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे वर्क करेंगे। तो बेसिकली एक जॉब पोर्टल में आप कैसे नेविगेट कराओगे लोगों को, कौन कौन इन्वॉल्व रहेगा, आपके टारगेटेड कस्टमर्स क्या हैं, यूनिक पॉइंट ऑफ सेलिंग क्या रहेगा आपका। नेक्स्ट स्लाइड मनीष। टेक्नोलॉजी स्टैक आप देख सकते हो यहाँ पे। टेक्नोलॉजी स्टैक में आप कुछ भी डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड और जो आप में एबिलिटी हो बनाने की। और ये टेक्नोलॉजी स्टैक आप बाद में जाके चेंज कर सकते हो अपने नीड के अनुसार। उसके बाद हमारे कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं कि जैसे हमने कैसे बनाया था। उसमें जितना ज़्यादा आप सिंपल रखोगे, जितना डेटा ओरिएंटेड रखोगे, उतना आपको हेल्पफुल रहेगा। जैसे किसी ने पूछा था कि व्हाट वाज योर यूनिक फीचर्स इन लाइक इन द पोर्टल। सो बेसिकली यूनिक फीचर ये होता है कि आप कितने इजीली जो कोई ना दे पाए वो आप डालोगे। जैसे देखो मल्टी लैंग्वेज बना सकते हो, इवन मैप बेस्ड रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो। हमें आंध्र प्रदेश में जितने कॉलेजेस हैं उनका डेटा प्रोवाइड करना था, इंस्टीट्यूशन उनको मॉनिटरिंग करानी थी। हमने मैप बेस्ड कर दिया कि आप आंध्र प्रदेश के मैप के किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे आप टैप करो, वहाँ पे के अंदर इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट खुल जाएगी। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन का निकाल के वहाँ से डेटा निकाल सकते हो। कुछ होमवर्क गैदरिंग हमने की थी, जैसे नैक एक्रीडिटेशन होता है, एनआईआरएफ रैंकिंग होती है, इन सबको भी ध्यान रखना होता है। तो मतलब बेसिकली होमवर्क करके जाना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद लाइक हमने कंपैटिबल विद कलर ब्लाइंड पर्सन ऑल्सो बनाया था। और ब्लॉकचेन एज टेक्नोलॉजी स्टैक जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपको डालना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड मनीष। यहाँ पे आप लॉगिन बहुत सिंपल रख सकते हो, कोई ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी या बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं। हाँ, स्मार्ट वर्क आपको जरूर करना है यहाँ पे। बेसिकली जितना आप अपना पोर्टल और जो चीज़ बहुत सिंपल रखोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
दिस इज नॉट 4 स्लाइड एग्जैक्टली। मैंने स्टार्टिंग में ये बोला कि ये वो पीपीटी नहीं है कि जो हमने सेलेक्ट करके सेंड किया था उन्हें। ये वो पीपीटी है जो हमने अपने रेफरेंस के लिए बनाया था कि हम कैसे स्क्रीनशॉट्स रखेंगे। हमने आपको एग्जांपल देने के लिए हमने अपने पोर्टल से स्क्रीनशॉट लिया है कि हमारा पोर्टल कुछ ऐसा दिख रहा था वहाँ पे। what we all have to prepare there in such in 36 आवर 36 आवर्स में अंश आपको जजेस जो है वो आपको फीचर्स ऐड करने को बोलेंगे। आप जो भी उनको आइडिया अप्रोच दोगे कि सर हम ये ऐड करेंगे, वो जजेस भी अपने हिसाब से आपको बोलेंगे कि आप एक काम करो, एक दो ये भी फीचर्स हैं, आप ये भी ऐड करो। तो फीचर्स आपको 36 आवर्स में रुक रुक के ऐड करने पड़ेंगे उसमें। Yeah, if you have a basic knowledge about C and Java, so Sejal आपको अकेले तो participate करना नहीं है. You will have a team of 6, तो you can be a good presenter or you can be a good question raiser. सो आपके पास कोई भी नॉलेज हो, आप अपनी टीम के लिए कितना वर्क कर सकते हो वो डिपेंड करता है। विनय का क्वेश्चन है, कैन वी ऐड स्क्रीनशॉट्स ऑफ प्रोटोटाइप इन पीपीटी? प्रीवियसली ऐसा लोग करते थे, बट आपको अगर आप रेस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं कि 4 से 5 स्लाइड आप ऐड कर सकते हो, तो मैक्सिमम अगर आप उस स्क्रीनशॉट्स को छोटे फॉर्मेट में करके पीपीटी में ऐड करो तो आप कर सकते हो। What else we have to prepare there other than prototype and ppt? Other than prototype, you have to prepare your team for a hackathon. Like 36 hours non-stop coding थोड़ा hectic हो जाता है वहाँ पे, और वहाँ IIT से लेके NIT तक के स्टूडेंट आते हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, कुछ मेंटल प्रेशर भी रहेगा। सो प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर प्रिपेयरिंग द पीपीटी एंड प्रोटोटाइप। other than there is no requirement. How many teams will be selected in the first round? प्रणव, इसमें एलिमिनेशन नहीं होता है SH में। आपको टोटल 3 राउंड खेलने पड़ेंगे, जैसे टेस्ट सीरीज होती है 5 मैचेस की, तो 3 राउंड में ऐसे जजेस जो है वो क्वेश्चंस मार्क करते हैं, आपके पॉइंट्स मार्क होते हैं, आपको मार्क्स मिलते हैं कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आपका इजी टू यूज कितना है, फ्यूचर स्कोप क्या रहेगा, यूजर फ्रेंडली है या नहीं है, टेक्नोलॉजी स्टैक आप कैसा यूज। तो इन सब के बेसिस में 1 to 5 से लेके मार्क्स मिलते हैं। तो इन तीनों राउंड्स में जिस टीम का मार्क्स सबसे ज्यादा होगा वो विनर होगी, और हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए एक विनर होता है। Then how can we add if we don't know the code, how to implement the features as told by judges on the spot? यही तो डिफरेंस होता है कि अगर आपको नहीं पता कि जजेस ने जो फीचर्स बोला, अगर आप वो नहीं ऐड कर पाए, तो या तो आप उनको फ्यूचर स्कोप में दिखा दो, बट अगर किसी और टीम ने वो चीजें इंप्लीमेंट कर दी तो डेफिनेटली उसे पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे। Can we explain the features through flowchart or bullets? Yeah, definitely you have to do, like you have to explain your unique points, your features through flowchart, और यूज केस इसीलिए यूज होता है आकांक्षा कि आप उसमें कितनी बेटर तरीके से नेविगेशन कराओगे पेजेस के बीच में, कितना इजी रहेगा, क्या फीचर्स को, क्या यूनिकनेस रहेगी, टारगेटेड कस्टमर्स कौन रहेंगे आपके। What are 3 rounds you mentioned and how it is judged? Good question, Ridhima. Like basically 3 राउंड में फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड होगा, और एलिमिनेशन राउंड नहीं होगा। आपको लास्ट थर्ड राउंड तक पीपीटी और या सॉरी नॉट पीपीटी प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। और उस जैसे पहले राउंड में क्या होता है कि आप अपना 30% सॉफ्टवेयर शो करो कि सर हमने साइन अप पेज तक बना दिया, अभी लॉगिन पेज और लैंडिंग पेज बनाना बाकी है। तो आप वहां तक प्रेजेंट करो कि सर हमारा साइन अप ये है, अपने पीपीटी अपने प्रोटोटाइप को इंट्रोड्यूस करो वहाँ पे कि हम क्या नेक्स्ट, और उनको ये भी बताना पड़ेगा कि आप जब नेक्स्ट राउंड में आओगे तो हम क्या क्या रखेंगे। फिर जजेस आपको वहाँ पे कुछ और सजेशंस देंगे कि अच्छा ठीक है, आपने इतना, सपोज दैट आप गूगल मीट ऐप बना रहे हो, तो जजेस आपको ये बोल सकते हैं कि अच्छा ये एक काम करो, जैसे आप यहाँ चैट बॉक्स में सिर्फ चैट करते हो, आप फाइल शेयरिंग भी लगा दो इसमें फीचर्स। तो वो सेकेंड राउंड तक आपको वो फाइल शेयरिंग वाली फीचर ऐड करनी पड़ेगी उसमें। फिर जजेस सेकंड राउंड में आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने ऐड कर दिया, और उस ऐड करने के साथ साथ अगर आप कुछ यूनिक फीचर भी दिखाओगे कि जैसे सर देखो मैंने ऐड तो कर दिया, और आप चाहो तो सर इसमें पेमेंट का भी सिस्टम हमने लगा दिया है, तो जजेस डेफिनेटली इंप्रेस होंगे, और लाइक आपको मार्क्स हो सकता है वेटेज ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो बाकी 5 टीमें होती हैं, 4 टीमें होती हैं, सबका प्रोटोटाइप रन होगा वहाँ पे, सब कुछ ना कुछ लेके आएंगे, सबके पास लॉगिन पेज, साइन अप पेज, लॉग आउट पेज सब होगा। मैटर ये करेगा कितना यूनिक वे से आप प्रेजेंट करते हो और फीचर्स कितने ज्यादा हैं आपके पास।
क्योंकि जिसके पास जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे वो यूज़ करेंगे। हाउ मेनी डेज? नो कंसेक्यूटिव राउंड्स में डेज नहीं गैप मिलेंगे आपको। इंटरनल हैकेथन होगा, आप पीपीटी सबमिट कर दोगे, वहाँ पे पीपीटी सेलेक्ट होगा, थोड़ी 10 दिनों की आपकी ट्रेनिंग होगी और 36 आवर नॉन स्टॉप कोडिंग राउंड होगा। उस 36 राउंड में 3 बार जजिंग राउंड होगा। उस तीनों जजिंग राउंड में आपको 6 to 7 आवर्स का गैप मिलेगा। आपको नॉन स्टॉप आपको सोने होना नहीं है वहाँ पे, तो 6 से 7 घंटे के बीच में आपको फीचर ऐड कर देना होता है। 36 आवर्स में पूरा इवेंट खत्म हो जाता है। हार्डवेयर वालों को थोड़ा ज़्यादा दिन मिल जाता है। ट्रेनिंग राउंड ऑफलाइन होता है, नहीं रीतिका, ट्रेनिंग राउंड ऑनलाइन ही होता है। और जो यहाँ पे एसआईएच के विनर्स रहेंगे उनको सिंगापुर इंडिया हैकेथन में के लिए भी इनविटेशन आएगा कि आप इसमें भी पार्टिसिपेट करो। तो एक रिटन टेस्ट होता है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करके आपको सिंगापुर इंडिया हैकेथन में जाने का चांस मिल सकता है बाय गॉड्स ग्रेस। और एक चीज़ और है कि अगर आप जाके फाइनल में हार जाते हो तो क्या, क्योंकि जीतने वाले को तो सब कुछ मिल जा रहा है, हारने वाले को क्या? हारने वालों को ये चीज़ मिल जा रहा है कि अगर जीतने वाली टीम कुछ भी करे उससे मतलब नहीं है। आप चाहे तो अपने आपके पास जो प्रोटोटाइप है उसको लेके आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो। और गवर्नमेंट और एक फीचर ये भी है, एक पर्क ये भी है एसएच का कि अगर आप भले हार गए हो एसएच में, लेकिन अगर गवर्नमेंट को आपका पीपीटी पसंद आए, सॉरी आपका प्रोटोटाइप पसंद आ सकता है, तो जीतने वाली टीम की जगह हारने वाली टीम से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती है कि आओ हम आपको इंक्यूबेशन दे रहे हैं, आप स्टार्टअप करो। एनी मोर क्वेश्चंस? आपको 36 आवर्स में सिर्फ पीपीटी सॉरी प्रोटोटाइप बनाना नहीं होता, बाकी टीम से भी बढ़िया बनाना होता है। कितनी टीम सेलेक्ट होंगी अपने कॉलेज में से? रितिका, इट इज लाइक फ्यूचर क्वेश्चंस की, लाइक ये भी हो सकता है कि आप जो 7 पीपीटीज भेजोगे वहाँ पे 7 की 7 सेलेक्ट हो जाए और आपको वहाँ फिर दूसरे कॉलेज से इनविटेशन आएगा, लाइक जहाँ नोडल सेंटर होगा। आपको हो सकता है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर और ये प्रोटोटाइप बनाना पड़ सकता है। आने आने का जो रिइंबर्समेंट होता है वो गवर्नमेंट आपको पैसे दे देगी, रहने खाने का सब कुछ मिलेगा, एकोमोडेशन लॉजिंग सब कुछ होगी वहाँ पे। ट्रेनिंग इज गिवन फॉर व्हाट? ट्रेनिंग इज गिवन फॉर लाइक आपको, आप सपोज दैट आप ब्लॉकचेन पे कुछ बना रहे हो, आपका प्रोडक्ट ब्लॉकचेन पे है, तो गवर्नमेंट आपको थोड़ा ब्लॉकचेन में ब्रीफ देगी, थोड़ा सा फीचर देगी, मेंटर से कनेक्टिविटी कराएगी कि अगर आपको ब्लॉकचेन से कुछ हेल्प चाहिए तो आप इनसे ट्रेनिंग से ले सकते हो, सीख सकते हो उन्हें। Does those teams having some sort of AI or ML implementation in their projects have higher chances of getting selected? नो नॉट लाइक दैट। अगर प्रॉब्लम स्टेट डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा है। अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वो एआई वर्ड एमएल वर्ड यूज्ड है तो आपको अपने प्रोटोटाइप में एआई और एमएल की चीज़ें लगानी पड़ेंगी। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आपको एआई और एमएल लगाने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सिंपल सा एक वेब पोर्टल लेके जा सकते हो, बढ़िया से एक्सप्लेन करो और आप जीत सकते हो। टेक्नोलॉजी के पीछे बहुत ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है। Okay, thank you. कॉलेज राउंड में पीपीटी में मेंटर मेंशन करना जरूरी है? इट्स नॉट नेसेसरी बट यू कैन ऐड। बट आपको ये एक्सपेक्ट करना होगा कि आप जो कॉलेज में दिखा रहे हो पीपीटी, यही सेम पीपीटी वहाँ पे सेंड करोगे, तो उस लेवल की आपको बनानी पड़ेगी कि ऑल इंडिया लेवल पे आपका सिलेक्शन हो जाए। Yeah, if you get selected in internal hackathon, your only PPT will be shared to the government, not prototype. And you have to make prototype in the final round. What is ideal duration for the presentation? Ideal duration for the presentation is 7 to 10 minutes. और थोड़ा जज जैसे आपका इंटरव्यू कैसा हो रहा है किसी कंपनी में, वो इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है। तो उसी तरह आपका जजिंग राउंड में कितने टाइम मिल रहे हैं, कितने ड्यूरेशन, वो थोड़ा जजेस पे भी डिपेंड करता है। अगर जजेस को आपको आपका आइडिया पसंद आ रहा है तो आपको
30 मिनट्स तक भी दे सकते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, जो हम पहली बार गए थे, तो पहले जो हमारा थर्ड राउंड फाइनल राउंड हुआ था, उसमें जजेस ने हमें 45 मिनट्स दिए थे प्रेजेंट करने को। लाइक 45 मिनट्स तक हम कंटिन्यू अपना आइडिया दिखा रहे थे, क्योंकि उन्हें पसंद आ रहा था। तो आप ये भी हो सकता है कि अगर जजेस इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली ज़्यादा टाइम देंगे आपको, बट आपको आइडियली लेके चलना है कि 7 to 10 मिनट्स में आप कंप्लीटली प्रेजेंट कर दो अपना आइडिया। यस, गवर्नमेंट इज डेफिनेटली बेनिफिटेड। एक्चुअली क्या होता है, गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें चाहिए होती है, जैसे पब्लिसिटी और स्टार्टअप माइंड्स। तो पब्लिसिटी तो उन्हें मिल ही जाएगी शायद से। दूसरी बात होती है कि रियली वो इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं, या डेफिनेटली करते हैं। अगर आपको अगर उन्हें आपका आइडिया पसंद आ रहा है तो वो आपको इंक्यूबेशन प्रोवाइड करेंगे, आपके जो आपको फंडिंग देंगे, और फंडिंग में से कुछ शेयर्स लेंगे आपसे, और आपको बोलेंगे कि आप फ्यूचर। और बहुत से ऐसे मैं स्टार्टअप्स को जानता हूँ जिन्होंने एसआईएच जीता है और उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर अपना स्टार्टअप किया गवर्नमेंट फंडिंग को लेकर। In case we can create a design for a project, we can link it in a ppt or add, yeah definitely you can add, but foundation यही है कि अगर आप स्क्रीनशॉट लगा रहे हो तो आप 5 स्लाइड्स में एंड कैसे करोगे, अपने 4 to 5 स्लाइड्स में एंड कैसे करोगे? कोई बहुत ज़्यादा लेंथी पीपीटी वो नहीं देखेगा। आप लिंक कर सकते हो, एक छोटा सा लिंक दे सकते हो उसमें कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली विजिट हियर करके लिंक दे सकते हो आप। Any more queries? या बेसिकली इंटरनल पोर्टल्स, और क्या माइंड में रखना है, माइंड में आपको बेसिकली सिंपल चीज़ें रखनी है कि आपका टारगेटेड कस्टमर कौन होगा। अगर टारगेटेड कस्टमर वो गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट ऑफिसर की वेबसाइट बना रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट अप्रोच से सोचना पड़ेगा कि कैसे वो गवर्नमेंट का जो ऑफिसर बैठा रहेगा आपके पोर्टल पे, वो कितनी इजीली यूज कर पाएगा। तो वो उस हेल्प से सोचना है। आपको टारगेटेड कस्टमर्स को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ध्यान में रखना पड़ेगा। We have to explain our PPT after third round or in the start. You don't have to explain your PPT either third round or start. You have to explain your prototype. जैसे आप 30% प्रोटोटाइप, सपोज दैट आपको एक पोर्टल बनाना है, आपने लॉगिन पेज तक बना दिया, तो आप फर्स्ट राउंड में इंटू अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन से लेके और उसके रिप्रेजेंटेशन और लॉगिन पेज तक आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 30%। नेक्स्ट 30% सपोज दैट आपने लैंडिंग पेज बना दिया, 2-4 और पेजेस ऐड कर दिए, तो आप उन्हें एक्सप्लेन कर दो। और थर्ड राउंड में आप पूरा पीपीटी, सॉरी नॉट पीपीटी, पूरा प्रोटोटाइप आपको एक्सप्लेन करना होगा। पीपीटी तक का काम सिर्फ इंटरनल हैकेथन तक का है, और वहाँ के सिलेक्शन तक। एक बार पीपीटी आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, देयर इज नो यूज ऑफ पीपीटी, यू हैव टू वर्क विथ ओनली प्रोटोटाइप। Any more questions? आई थिंक सर डाउट्स मोस्टली क्लियर हो चुके हैं पार्टिसिपेंट के। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। एंड किसी के अभी भी कोई डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ सकता है। सब मत कर लेना, मतलब बेसिकली कुछ 1-2 डाउट जिसके बच रहे हैं। नहीं है तो वी कैन वाइंड अप दिस सेशन। सर 11th is the last date for team registration, right? यस। Okay. Thank you, Tajas, for coming today and sharing your insights. So I believe कि आप किसी को कोई doubt नहीं है, so we are going to wrap up the session. Thank you everyone and thank you Tajas for your time. Thank you, everyone, and wish you all the luck for the SAH. Have a great one. There are some hand raised. Is there any questions?
Krishna and Vinayak, you want to ask something? Actually, I've joined it. Can you sum up what we have to do? You'll get the summary in the group, in the We essay will be team. sharing out, yeah, over our social media handles and in the group, you will get the summary of the session today. Okay, thank you everyone. Thank you so much, sir. Thank Thank you you. so much. Just Thank you, make sir. make your prototype and PPT innovative. Good luck. Hope your all teams get selected in for the grand finale. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, welcome everyone. Bye.